भी चर्चा चलता रहता, ऐसा स्क्रॉलिंग तो चलता है सर। इनका भाषण तो लाइव हो रहा है, गौरव गोगोई जी का भाषण लाइव हो गया है, इनका प्रॉब्लम क्या है यही मैं समझ में नहीं आ रहा। इतना डर क्यों है, इतना असुरक्षितता भावना क्यों है? व्हाई दे आर सो मच ऑफ अफ्रेड? सर ये सोचा था कि राहुल गांधी जी की भाषण होगी और राहुल गांधी को भाषण को छोटा करने के लिए, गुमराह करने के लिए, राहुल गांधी जी टक्कर देने के लिए राहुल गांधी की भाषण नहीं हुई, ये बस गुगली खा गए। बटन मेरे पास नहीं है, इसका बटन मेरे पास थोड़ी है। आपसे डर गए है। इसी सदन से पारित हुआ योजना का एक स्क्रॉल चला रहे छोटे से छोर, और इनका जो लाइव भाषण हो ही गया है, गौरव गोगोई का पूरा लाइव दिखाया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतना असुरक्षित भावना नहीं रहना चाहिए, इतना असुरक्षित। दिस टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी फीलिंग शुड नॉट बी देयर. You should not have so much of insecurity feeling, and whenever there is a discussion, such type of scrollings are always there. आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आप ये जानते हैं कि टीवी का कंट्रोल स्पीकर के पास नहीं रहता। नो, ये टीवी का कंट्रोल एक सिस्टम है जो आपने बनाया है। आप इस छोटी बातों पर इस तरीके से गंभीर टिप्पणी करना उचित नहीं है। निशिकांत जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ। मैं अपने दल के नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप का शुक्रगुजार हूं। एक मिनट। माननीय सदस्य, आप सीनियर व्यवस्था हो, शब्द बोलते समय ढंग से बोला करो। ये तरीका ठीक नहीं है। आप क्या शब्द बोलते हो, क्या नहीं बोलते, अच्छा लगता है क्या? पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर जो है पहले वक्ता के तौर पर बोलने के लिए खड़ा किया। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला।
स्पीकर सर, गौरव गोगोई जब बोल रहे थे इस कांग्रेस पार्टी को शहादत के बारे में, लोगों का क्या बलिदान है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इन्होंने मणिपुर की बात की और पूरे देश को नहीं, पूरे संसद को जो है इन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग में से बहुत लोग मणिपुर नहीं गए होंगे, मणिपुर नहीं देखा है आपने। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ। सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे। और जो जगमोहन जी ने अपनी किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने 10 बार जिक्र किया है कि यदि एनके तिवारी जैसे अफसर नहीं होते तो शायद कश्मीर नहीं बचा पाते। और वही एनके तिवारी जब मणिपुर में आईजी बनकर गए तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो। आपने अभी कहा कि असम में समझौता हुआ, आप तो असम के हैं, सांसद हैं। क्या 83 के चुनाव में कितने % लोगों ने असम में वोट दिया था? कितने लोग मारे गए थे? और जब आपने ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ समझौता किया तो उस समझौते का एक पार्ट था कि ये सरकार जो है हटाई जाएगी, आपकी सरकार खत्म की जाएगी। क्या वो समझौते का पार्ट नहीं था? मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि वो समझौते का जो पूरा प्रारूप है इस सदन के अंदर जब अपना जवाब दें तो शायद वो जवाब देंगे। मिजोरम में आपने 7% वोट के आधार पर, केवल 7% वोट के आधार पर, केवल 7% पूरे देश को जानने के लिए लालथन हावला की सरकार बना दी थी। और इसीलिए जब लाल डेंगा के साथ सरकार बनाई आपने, जब उनके साथ समझौता किया तो 7% के साथ आप उसको डेमोक्रेसी चलाने देते। इतिहास में जाइए, इतिहास में झांकिए, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए ही कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में यहां आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं थे ना? इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे? कहां गए थे? किस तरह की चर्चा है? और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, दो चीजें कह रहे हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी है। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी भी नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है। आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं, कभी सावरकर नहीं हो सकते। ये जो सवाल है सर, ये INDIA की बात करते हैं। मुझे तो, मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं, और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA, यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया बात कर रहे हैं सर। मैं तो इस मणिपुर का जो है शुक्रगुजार हूं, मणिपुर का शुक्रगुजार हूं, जिसको अभी आपने डांटा सर, दानिश अली को जिसको आपने डांटा, भारत माता की जय कहने पर भी उसको लगता है कि ये बीजेपी का नारा है। लेकिन मैं मणिपुर का शुक्रगुजार हूं कि जितना इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, 1947 के बाद से उतनी बार इंडिया का यहां नारा लगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मेरे प्रधानमंत्री अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रधानमंत्री
एक बात कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा तो मैंने सोचना शुरू किया सर कि प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों कह रहे हैं, हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपोजिशन वाले अपने विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं और उसमें वो देखना चाहते हैं कि कौन दल सचमुच उनके साथ है। तो मैं ताब पर गया सर कि अविश्वास प्रस्ताव पर कौन कौन पार्टी हमारे खिलाफ है। सबसे बड़ी पार्टी डीएमके है, बड़ा सम्मान करता हूं मैं, करुणानिधि जी का बड़ा योगदान रहा है इस देश को बनाने में। अब आप समझे सर कि 1976 में भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर इस कांग्रेस ने करुणानिधि जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया और 80 में जब इंदिरा जी की सरकार बनी तो यही डीएमके उनके साथ हो गई। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। राजीव गांधी का मर्डर हुआ सर, राजीव गांधी का मर्डर हुआ, 2 कमीशन बना, वर्मा कमीशन बना और जैन कमीशन बना और जैन कमीशन ने कहा कि लिट्टे को सहयोग करुणानिधि जी की पार्टी डीएमके देती थी। क्या जैन कमीशन गलत था? क्योंकि उस कमीशन को आपने उसके बाद भी आपके साथ है। मैं तो बहुत सम्मान करता हूं। आप ये बताएं कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, आप ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की बात करते हो, इसी सदन के बड़े इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, मैं सम्मान करता हूं, मेरे दोस्त हैं, राजा साहब, कनी जी बैठी हुई है, दयानिधि मारन जिनका विभाग बदल गया। हमने आपके ऊपर 2G का केस लगाया, हमने बंद किया। उस गरीब महिला को सर, बेचारी महिला को इन लोगों ने जेल में डाला। आप हमारे खिलाफ हो। हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमने आपका विभाग नहीं बदला, हमने आपका विभाग नहीं बदला। आप अपोजिशन का लेके आए हो, आप अपने पोजीशन पार्टी की बात कर रहे हो। दूसरी पार्टी है टीएमसी, दूसरी बड़ी पार्टी है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सर कि प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि वो हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात करते हैं, एक शॉर्ट लाइन में बात करते हैं। दूसरी पार्टी है सर टीएमसी। माननीय राजनाथ जी संजोग से बैठे हुए हैं। सिंगूर का बड़ा आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी थी, हमने साथ दिया टीएमसी का। माननीय राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष होते हुए ममता बनर्जी के रैली में शामिल हुए, हमने आंदोलन को साथ दिया। यदि आज आप बंगाल में सरकार बनाए, उसमें हमारा भी कोई योगदान है, लेकिन आपको करप्ट किसने बनाया? नारदा का केस हमने आपके ऊपर नहीं किया, शारदा का केस हमने आपके ऊपर नहीं किया, इस कांग्रेस ने किया। आपका विरोध उस कांग्रेस से होना चाहिए कि हमसे होना चाहिए? तीसरी पार्टी है लालू प्रसाद जी की आरजेडी, ललन सिंह जी यहां बैठे हुए, हमने उनको जेल नहीं भेजा सर। मैं केवल यह कह रहा हूं किस तरह की ये अपोजिशन की यूनिटी है। एक जो गाना है ना सर, ये कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं, गीत लिख दी दीवारों पर, गाने की सुर नहीं, गाने की रीत नहीं। मतलब आप ये समझे सर कि ये आंख का अंधा नाम नैन सुख, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन नाम क्या रखा है? इंडिया। लालू प्रसाद जी हैं सर, लालू प्रसाद जी को ललन जी ज्यादा बताएंगे बोलते हुए। यदि इस हाउस में सही सही बोलेंगे तो, यदि सच बोले तो आज जो लालू प्रसाद जी के बेटे को जो है उन्होंने, जिसने उप मुख्यमंत्री बनाया है, वही उसके जो है विरोध में खड़े थे सर। और यहां की कांग्रेस सरकार थी 95 में जिसने कि लालू जी को अंदर कर दिया। हमसे किस बात का विरोध? विरोध तो आपको कांग्रेस से होना चाहिए ना। ये ललन जी पिटिशनर थे, यही तो मैं कह रहा हूं सर। तीसरी पार्टी है सर मुलायम सिंह यादव जी। चौथी पार्टी है मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी सर। अच्छा, मुलायम सिंह जी यहां थे तो हम लोगों के लिए बड़े सम्मानित थे, और जब भी है देश प्रेम की जो भावना थी उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर सकता है सर। लेकिन मुलायम सिंह यादव की इमेज को किसने चौपट किया? ये मेरे पास यदि बोलेंगे सर, सारे पेपर में लेके आया हूं कि विश्वनाथ चतुर्वेदी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पीआईएल करते, और सीबीआई का केस जो है 2007 में
डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर हो जाता है। 2008 में इसी सदन में मुलायम सिंह यादव जी ने आपको सीबीआई के डर से न्यूक्लियर में सपोर्ट किया कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के तहत किया, ये आप बता दीजिए जनता को। और उसके बाद आपने इनकम टैक्स का केस कर दिया। और हमने क्या किया मुलायम सिंह यादव जी के साथ? हमको पता था कि वो ईमानदार आदमी है, हमको पता है कि देश के प्रति उनकी भावना जो है, और ये पिछड़े दलित शोषित वर्ग से आते हैं, इसीलिए कांग्रेस ने उसको ये किया। हम लोगों ने सीबीआई के सारे केस को खत्म किया और आज मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर केस नहीं। फिर भी मुलायम सिंह यादव जी हमारे विरोध में, और उसके बाद पद्म भूषण भी दिया हमने। उस दिन सुप्रिया जी बहुत बोल रही थी, एनसीपी है नेचुरली करप्ट पार्टी। कहा है सर? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बीजेपी कहती है, हम लोग कहते रहते हैं। मैं गया उनके तह पर गया कि 80 में मैं केवल अपोजिशन यूनिटी की बात कर रहा हूं सर। 80 में शरद पवार साहब की चुनी हुई सरकार को किसने बर्खास्त किया? हमने नहीं किया, इस कांग्रेस पार्टी ने किया। किस आधार पर शरद पवार साहब ने एक अलग एनसीपी बनाई थी? हमने नहीं कहा शरद पवार साहब को बनाने के लिए। किस आधार पर जब हम पहली बार यहां जीत कर आए तो रोज जो है इसी तरह की महंगाई की बात होती थी, एक एक्सचेंज की बात, कमोडिटी एक्सचेंज की बात होती थी, रोज पवार साहब के ऊपर आरोप लगते थे, हमने नहीं लगाया। और फाइनली पवार साहब जैसे सीनियर आदमी को कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री छोड़ना पड़ा। और उसके बाद मैं कागज देख रहा था सर, 2012 और 13 में जिसके लिए कहा कि 70,000 करोड़, जिसके लिए कि काफी पहले तो अब धीरे से बोलती थी, हंस के बोलती थी तो अच्छा बोलती थी, अभी थोड़ा जोर जोर से बोलती है। अब आप समझिए कि व्हाइट पेपर इसी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने किया। छगन भुजबल जी के ऊपर महाराष्ट्र सदन का केस इसी पृथ्वीराज चौहान ने किया, उन्हीं की एसीबी ने किया। 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम का भी केस इसी कांग्रेस ने किया। हमने क्या किया आपके साथ? हमसे क्यों, किस बात की लड़ाई है? हमने आपके साथ क्या किया? आपको तो इस कांग्रेस को देखना चाहिए था। इसके बाद एक पार्टी है सर, फारूक अब्दुल्ला साहब, बड़े सीनियर हैं यहां। 1953 में, याद करिएगा सर, 1953 में शेख अब्दुल्ला साहब को जेल में इसी कांग्रेस पार्टी ने बंद किया। 1975 तक 22 साल वो आदमी जेल में रहा इस कांग्रेस पार्टी के कारण। और उसके बाद समझौता किया, शेख इंदिरा समझौता 1975 में। इनका विरोध उसके साथ होना चाहिए कि हमारे साथ होना चाहिए? यहां ओवैसी साहब बैठे हैं, उस दिन पूछ रहे थे कि मैं इधर रहूं कि उधर रहूं। आप तो मुसलमानों की बात करते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लाया। उसने कहा कि पूरे देश में मुसलमानों की हालत खराब है। आपको विरोध इस कांग्रेस से होना चाहिए, हमारे साथ प्यार होना चाहिए कि आप उसके साथ अविश्वास प्रस्ताव पे खड़े हो। और बचे जेडीयू सर, जेडीयू। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ एक बात आपको कहना चाहता हूं कि 2005 में जब जेडीयू की सरकार नहीं बनी और रामविलास पासवान जी की आवश्यकता पड़ गई, तो वो मीटिंग 2 जगह पर हुई सर। एक पत्रकार के घर पर हुई जिसका नाम मैं नहीं बोलना चाहता, और दूसरी मीटिंग रामविलास पासवान जी, नीतीश जी की मेरे घर पर हुई सर। और उस वक्त का मैं एक चीज और खुलासा कर देना चाहता हूं कि जेडीयू को यदि सबसे ज्यादा किसी ने फंड करवाया होगा तो यदि 2, 4, 5 आदमी होंगे तो उसमें एक नाम निशिकांत दुबे का भी है। आप मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरा है, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कर रहा हूं, बड़ी गंभीरता के साथ कर रहा हूं। आप उसकी बात कर रहे हैं? आप पूछ लीजिएगा अपने मुख्यमंत्री से। लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव आया सर, अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई हैं, सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना,
जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? अध्यक्ष जी, जिसका नाम लिया जा रहा है वो सदन में मौजूद है, वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है। दूसरे क्यों कर रहे हैं ऑब्जेक्शन? दूसरे क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? वो खुद सदन में मौजूद है, उनको कोई ऐतराज नहीं है। दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? जब ऑलरेडी सदन में लोकसभा की माननीय सांसद मौजूद है और वो ऐतराज नहीं करेंगे तो दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? अब आप समझिए सर, मैंने दोनों बातें कही कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैं अपने बात पर कायम हूं सर। आप ये समझे सर, ये केस है सर, इनकम टैक्स का केस चल रहा है। नेशनल हेराल्ड का इनकम टैक्स का एक केस चल रहा है ट्रिब्यूनल में। मैं जो भी पेपर कहेगी कांग्रेस, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है इसको रखने को तैयार हूं। और यदि इसमें एक भी बात गलत होगी तो मुझे आप सदस्यता से उसी दिन निकाल दीजिएगा सर। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सुनना चाहिए सर। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि ये फाउंडेशन के जितने इनके केस है, नेशनल हेराल्ड के जितने केस है, उसकी असेसमेंट करें। हाई कोर्ट का आदेश सर, हाई कोर्ट का आदेश आ गया, हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि इसको जो है सेंट्रलाइज करना। ये हाई कोर्ट का आदेश है सर। अभी ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब आप समझिए कि इनकम टैक्स से बचने के लिए 1 लाख रुपया देके कोई 5,000 करोड़ की कंपनी ले सकता है। ये मैडम सोनिया जी और राहुल जी बता सकते हैं सर, कोई दूसरा नहीं बता सकता। और ये कह रहे हैं कि केवल हमारे ऊपर ये चीजें होती है। यहां जीएम सिद्धेश्वर बैठे हुए सर, हमारे पार्टी के सांसद हैं जीएम सिद्धेश्वर। अब भी 80 करोड़ रुपया उन्होंने इनकम टैक्स में भरा है सर। यदि मोदी जी आपको चोर कहने की बात करते हैं तो अपने पार्टी के भी लोग जो दोषी हैं उनको भी 80 करोड़ रुपया दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं सर, जीएम सिद्धेश्वर को 80 करोड़ देना पड़ा। बीजेपी के 4 बार के सांसद हैं और आप इनकम टैक्स के लिए बचाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हो। ईडी की रेड होती है सर। और मैं आपको बताऊं कि एक भाग गया है, भंडारी है, मैं उसका पूरा नाम नहीं लूंगा क्योंकि भंडारी कोई भी हो सकता है सर। किसी भी दिन वो यूके से लौट कर आ जाएगा। मैंने इसी हाउस में कहा था कि किसी आदमी का जो है, दामाद जी का जो है मकान है लंदन में, ये कोर्ट का ऑर्डर है सर। एक आदमी जो भागा उसका नाम है सीसी थम्पी। कोर्ट के आदेश के बाद उसका बेल हुआ। इस कोर्ट का ऑर्डर है सर। उस कोर्ट के ऑर्डर में सीसी थम्पी ने ये एक्सेप्ट किया कि उसने जो दामाद जी हैं, दामाद जी के नाम पर कौन दामाद, कोई भी दामाद हो सकता है। इनको दामाद जी से क्या प्रॉब्लम है सर? मेरा भी दामाद हो सकता है। 12 ब्रांसन स्क्वायर थम्पी ने, जिसको थम्पी ने, कोर्ट ने आदेश दिया कि जब जरूरत होगी तुम आ जाना। आप समझिए कि वो भाग गया। उसने कहा कि 12 ब्रांसन स्क्वायर जो है हमारा है। उसी तरह से संजय भंडारी का जो आने वाला है सर, यूके कोर्ट ने जो आदेश किया है उसमें यह बात कहा है कि दामाद जी का वो मकान है। आप क्यों भाग रहे हो? तो जो मैंने आपको कहा कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है सर, ये अविश्वास प्रस्ताव का जो मूल मंत्र है कि बेटे को जो है सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। कल जो है सर, कल मेरी बात पर जो है बड़ा हंगामा हुआ, न्यूज क्लिक के ऊपर बड़ा हंगामा हुआ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये बताऊं, यदि न्यूज क्लिक का नाम यदि डिलीट या रेस्टोर हो गया, कांग्रेस को क्या समस्या है सर? न्यूज क्लिक आपका कौन लगता है? पुरकास्ट का नाम यदि रेस्टोर हो गया, पुरकास्ट आपका क्या लगता है? रोहिणी सिंह, अभिसार शर्मा या कोई भी मान लीजिए ठाकुर रंजन प्रागता, यदि उसका डिलीट हो गया नाम या एक्सपंज से फिर बाहर आ गया, आपको क्या परेशानी है? आपका कोई मतलब नहीं है। और मैं ऑन रिकॉर्ड एक और रिविलेशन करना चाहता हूं सर कि सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी थे प्रकाश कारात साहब, उनका पूरा का पूरा मेल मैं ऑन रिकॉर्ड आपको लाना चाहता हूं कि जो वो नेवेली राय सिंघम था,
उसके साथ उनके हजारों मेल हैं। और जब आप कहेंगे, मैं ऑन रिकॉर्ड उसको पेश कर दूंगा सर, कि सीपीएम किस तरह से देशद्रोही पार्टी के साथ है। हम तो आइडियोलॉजी में मानने वाले हैं। यदि हमने सीपीएम के साथ लड़ाई की आइडियोलॉजिकल, तो आज तक हमने सीपीएम के साथ समझौता नहीं किया। आज तक हमने समझौता नहीं किया। यदि हमने कहा कि कोई मुस्लिम लीग जिसने कि भारत विभाजन किया, आज तक वोट बैंक की राजनीति के बाद हमने मुस्लिम लीग के साथ नहीं लिया। लेकिन आपको जिस कांग्रेस पार्टी ने रोज रोज जलील किया, उसके साथ आप किस आधार पर जो है शासन में हो? मैं आपको बताऊं, मैं आपको अध्यक्ष जी, समस्या क्या है कि हमने जो है एक क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है गरीब के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं। एक विकास की पट्टी देखकर आपने अभी पूरे पार्लियामेंट को देखा कि किस तरह से परेशान हुआ। कारण क्या है सर? मैं जिस इलाके से आता हूं, मैं आपको बताता हूं कि रीजन क्या है और इतना बड़ा बखेड़ा क्यों। मैं जिस इलाके से आता हूं, वहां संथालपुरना इलाका है सर। यदि रात हो जाए, तो यदि कोई बीमार हो जाए, तो उसको गंगा नदी टपने के लिए कोई पुल नहीं था सर। आजादी के 75 साल बाद आज वो पुल बन रहा है साहबगंज का सर। झारखंड इस देश में सबसे ज्यादा माइंस और मिनरल्स देता है सर। 40% से ज्यादा माइंस और मिनरल्स इस देश का झारखंड में। उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा विस्थापन, सबसे ज्यादा पलायन उस झारखंड में। आज आप समझिए उसका कारण यह था कि हमारे पास कोई पोर्ट नहीं था सर। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण मल्टी मॉडल हब पोर्ट जो है साहबगंज में गंगा नदी में बना है। मैं जहां से सांसद हूं सर, 75 साल में वहां के लोगों ने रेल नहीं देखा। आज जो है, मैं गोड्डा की बात कर रहा हूं, गोड्डा जहां से मैं सांसद हूं, गोड्डा जो मेरा नाम है, मैं आपको बताऊं सर, 75 साल में गोड्डा के लोगों ने रेल नहीं देखा। आजादी के 75 साल बाद आज वहां रेल है, उस रेल को देखने के लिए 5 लाख की भीड़ आई थी। आज ये सिचुएशन है सर। ये लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं सर, पोजीशन की बात करते हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया। मैं एक ऐसा बदनसीब आदमी हूं सर कि जिसकी अपनी छोटी बहन इलाज के बिना मर गई। 93 में मेरे यहां कोई डॉक्टर नहीं था जो पेट दर्द का भी इलाज कर पाए। 93 में मैंने अपनी छोटी बहन को खोया है सर। आज उसके भाई होने के नाते मुझे गर्व है कि मेरे लोकसभा में एम्स जैसा इंस्टीट्यूट प्रधानमंत्री, देवघर है सर, 12 ज्योतिर्लिंग का देवघर है, वहां लोग पूजा नहीं कर पाते थे। आज बेंगलोर से, आज बंबई से, आज अमेरिका से, लंदन से सभी लोग वहां एयरपोर्ट पर चढ़कर आते हैं। यह विकास है। आज मेरे लोकसभा में 2 मेडिकल कॉलेज, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 16 ITI, 2 एग्रीकल्चर कॉलेज, 1 डेयरी कॉलेज, 4 केंद्रीय विद्यालय, ये सारी चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है सर। इनका विरोध यह है कि गरीब के घर में जो चूल्हा जल रहा है, जो घर घर में पानी जा रहा है, जो नल जल की पहल चल रही है, जो गंगा से पानी देवघर आने की बात चल रही है, उसका यह विरोध है सर। इनका विरोध यह है कि बाइडेन ऑटोग्राफ क्यों लेता है। इनका विरोध यह है कि पापुआ न्यू गिनी का जो है प्रधानमंत्री उनका पांव क्यों छूता है। इनका विरोध यह है कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री है वो उनको बॉस क्यों कहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे पिछड़े इलाके हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो, जितना काम किया है उसके कारण इनको लगता है कि 2024 में नहीं आने वाले हैं। मैं अध्यक्ष जी अपनी बात महाभारत से खत्म करना चाहता हूं। महाभारत का एक बड़ा कहानी है सर कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और पूरे, चाहे कौरव पक्ष के लोग हों चाहे पांडव पक्ष के लोग हों, वो सभी जो है चीरहरण को देख रहे थे। अध्यक्ष महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी, ये लोग नहीं समझेंगे सर, ये लोग इसीलिए नहीं समझेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जब परिवारवाद की बात करते हैं ना, तो इनको लगता है कि परिवार की बात करते हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी परिवार की बात नहीं करते हैं। वकील का बेटा वकील हो जाए, क्या दिक्कत है? आईएएस का बेटा आईएएस होता है सर। यहाँ डीजी हैं आरपीएफ के, वो आईपीएस भी हैं, उनके दोनों बेटे आईएएस बने सर। जो अपनी योग्यता क्षमता के साथ आते हैं, परिवार को वो क्या कहते हैं, आज मेरे यहाँ का नेतृत्व क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब परिवार से हैं। माननीय नड्डा जी ये हैं जिनके परिवार में कोई पॉलिटिक्स भी नहीं था। माननीय राजनाथ जी बैठे हुए हैं, माननीय राजनाथ जी बैठे हुए हैं, एक कॉलेज में जो है पढ़ाते थे सर, और आज समझिए कि इनको भगवान ने जो है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया, डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है सर, जिनके आगे पीछे जो है कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। हमारे जैसे लोग हैं। क्या है कि यहाँ जितना परिवार है ना, वो इनके पीछे हैं जो कि परिवार का आदमी नहीं है। और वहां समस्या ये है कि वो सभी परिवारवाद जो है वो उनका जो नेता है, इसीलिए उनका परिवार और परिवारवाद में फर्क है, उनको नहीं समझ में आएगा सर। तो मैं आपको ये कह रहा हूं सर कि आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ है। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है उस आदमी के खिलाफ है जिसने कि लोगों को मकान बना के दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के पीछे है जिसने कि लोगों को पीने का पानी दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने शौचालय दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के खिलाफ है जिसने सबों के घर में उजाला लाने की कोशिश की, गरीब के खिलाफ है। और जितने बहस होंगे सर, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का चीरहरण करेंगे, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं इतिहास से कि चाहे राम मंदिर बना दिया हो, 370 जो हमारी थी धारा, वो सारे तो हमने बना ही दिया। मैं केवल इतना कहता हूं सर कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, जयद्रथ, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो अर्जुन हो, सभी मौन धारण किए हुए थे। आज यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का गांव गरीब किसान के हितैषी का आप चीरहरण करेंगे तो जिस तरह से न धृतराष्ट्र बचा, न दुर्योधन बचा, न भीष्म पितामह बचे, न अर्जुन बचा, न युधिष्ठिर बचा, आप में से कोई भी बचेगा 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा। हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। सर रूल टीआर बालूजी, सॉरी टीआर बालूजी। अरे बालूजी को बोलने दो, टीआर बालूजी। मैंने अलाउ नहीं किया बालूजी, आपने अलाउ सर निशिकांत दुबे ने मेरा नाम लिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला कैसे लूटा। भारत माता इनका पेटेंट नहीं है। भारत माता 140 करोड़ लोगों की भारत माता है। ये गलत नैरेटिव चलाते हैं। ये नारी विरोधी है। इन्होंने नारी का अपमान किया। निशिकांत दुबे ने अभी नारी का अपमान किया। ये वो व्यक्ति है जो टीआर बालूजी, ये वो व्यक्ति है जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आदिवासी लोगों से पैर धुलवा करके पानी पिलाते हैं। ये वो व्यक्ति है जिसने आदिवासियों से अपने पैर धुलवाए और उनको पानी पिलवाया। सर ये वो व्यक्ति है जो आपका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। ये वो व्यक्ति है जो आदिवासियों से पैर धुलवा करके पानी पिलाता है। सर मणिपुर पर चर्चा नहीं की और ये जो है नफरत, टीआर बालूजी, यहाँ पर भी नफरत फैलाने का काम किया है इस व्यक्ति ने। Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. I support the no confidence motion on behalf of DMK. First of all, I start with Mr. Rishikant Dubey, who has ended his speech with reciting Mahabharata. I am also reminded of a particular episode wherein Krishna has advises Arjun to throw their aims his bow towards his grandfather, kids and kin, friends and everybody. That was a story in the epics. But what is the end result of the Mahabharata? Finally, they lost it
and King Arjun Dharma and other people won the case. He has recited about Draupadi and other people. So what has happened? Finally, that is the end result. That is most important as far as that epic is concerned. I am also not willing to oppose my old friends. They are all very close friends, especially my friend, the leader of the House, Mr. Narendra Modi, and other friends are there. The first friend, everywhere they are my friends, prevailing over the ruling party. I am rather hesitating to oppose them because of the only reason it was led by the late lamented leader Vajpayee ji. That was the only reason. And at the same time, now I am opposing. Now I am supporting the no confidence motion means because we want to kill the evils. Krishna advised Arjun, you are not going to kill your kith and kin and friends. You are going to kill the evils only. The same thing I am doing, sir. There is no other way for this, sir. Sir, moving the motion, no confidence motion against the brutally majority government, it is not fair on our part. It is not all fair. And moreover, it is at the fag end of the parliament, this parliament. It is not fair on the part of the opposition to bring the no confidence motion, sir. But there is no other way, sir, because Prime Minister is not coming. Prime Minister has been elected member of Parliament and nation's Prime Minister to attend the government Parliament only. He has not come so far. That is why there is no other way to bring the Prime Minister to this House. That is why a no confidence motion has been filed by the India opposition. Sir, to start with Tamil Nadu, he is making the stepmotherly attitude towards the Tamil Nadu, sir. What he has done, just before the 2019 election, James was a foundation laid by that same Prime Minister. Even after 5 years, they have not done even single brick over the first brick. They have not done it, sir. Sir, he has promised 2 crore jobs every year. By this time, 18 crore jobs would have been created. Nothing, he has not done. Sir, he has promised 15 lakhs per head. But he has not given even single rupee to the household. Sir, he has promised jobs, lakhs and lakhs of jobs to our young men. Even he has abolished 5 crore jobs in the Manrega. And moreover, over 46 years, the unemployment is still prevailing. He has not done it. He has failed to do that, sir. Sir, wherever he goes around the world, he talks about Tirukkural, he talks about Tiruvallur and so on, sir. But he is not making the rightful thing to Tamil Nadu, sir. Shame. Sir, 2,000 crores out of 50 lakhs, 2,000 crores out of 50 lakhs budget, can he provide to Tamil Nadu for the construction of AIIMS, sir? Just now, the other friend has said there are a lot of AIIMS have come throughout the nation, but nothing has happened in Tamil Nadu. Shame. Is it fair on the part of the Prime Minister? That is why we wanted to go, what we get out of him, sir. Sir, and they say the money has to, for the AIIMS, this AIIMS alone. For the Tamil Nadu AIIMS, the money has to come from Japan. Is it not shameful, sir, on the part of the Prime Minister? Sir, out of 41% of the allegation, we are getting only 20% against our exchequer income, exchequer payment from Tamil Nadu, sir. Some years back, the late lamented leader
Rahul Gandhi ji and Jayawardene had made an agreement. Rajiv Gandhi ji and Jayawardene made an agreement. In the 13th amendment of Sri Lanka should be taken care. And unless otherwise 13th amendment is made up, there won't be peace in northeast of the north and east of Sri Lanka. That is what both the leaders have agreed and signed in the agreement. That agreement has not yet been placed, not yet been retrieved from the cupboards of the Sri Lankan government. They have not done it. But every now and then, government of India is helping the Sri Lankan government often and often, sir. They have miserably failed to retrieve back the Kachetiu, which was owned by Ramanathapuram, king of Ramanathapuram, anciently, sir. They have not done it, sir. Women reservation, they are simply keeping quiet, and the women folk of India is cursing him, but for that purpose, he has to go. Sir, what happened to Thesootr? Yes. Thesootr is just, they kept in the cupboard. Only reason is, Madam Sonia Gandhi ji and Dr. Kalaya Karnanidhi came to the function in the forefront. They said in the forefront, that's all. It was laid, the foundation stone was laid by Dr. Manmohan Singh, overwhelmed by the whole of the world. Just on the laying of the foundation stone, the whole world appreciated. 160 years old project, sir. That has not, in the middle of the project, they have stopped it because Sangh Parwar has stopped it by a court order. So, who has created the route? The route was created by Vajpayee ji only. Line, alignment, everything was laid by Vajpayee only. It is his own child. But it has been brought up by Dr. Manmohan Singh and Sonia Gandhi ji and Dr. Kalaya Karnanidhi. Because they have brought up, only 30 kilometers is pending, sir. Otherwise, it would have been completed by 3 or 4 months. So, shameful on the part of this government. The government should go immediately because all the Tamils, in spite of his recital of Tirukural, all the Tamil stanzas, people won't forget him. Let him. He will face the sequence. Yes. Sir, the government has promised MSP. Only 700 people have been killed in Delhi. MSP has not come to the reality so far, sir. 15 lakhs, 2 crores, all are as history. And prices, the petrol and diesel. So what is the international price of crude oil? $80 or $85. What is the price of petrol and 100 rupees and 103 rupees? So this is not fair. But what has happened in those period, during UPA period, it was 60, 65, just like the only. At that time, the diesel price, what is that? Crude oil price was only 80 rupees. Now, $80. What is happening now, sir? Sir, 155 lakhs government loan is there. Now, what was the UPS for only 55 lakhs, sir? This is what, that is why we are opposing this government. Forthwith, we have to get out of this government, sir. Governance, sir. Coming back to treatment meted out by minorities. Minorities of Manipur have been killed ruthlessly, sir. Sir, what has happened? 143 people have been killed. 10,000 people have, 65,000 people have displaced. They have fled out of the particular state. And two women folk have been striped, gang raped, and paraded nude in the streets of Manipur, sir. Sir, it is worthwhile to say now, under 1,044 incidents took place. Women and children brutally killed. Where? It is not in Manipur, sir. It is in Ahmedabad, sir. The daylight they have been killed when Honorable, our Prime Minister, the former Chief Minister of
Gujarat was ruling the government. Shame. 2,500 people were missing. Majority are belonging to minority community. Shame. The whole civilized world was up in anger and condemned the Gujarat's drama in strong terms. Many fact-finding, impartial investigation revealed that merciless power politics, editorial and prescribed and targeted crimes, and CM of the day was accused of condemning violation. Not condemning the violence. But your own party, Prime Minister Vajpayee, condemned the bloodbath and said, don't cross sacred line of Raj Dharma. So I quote the PT story, sir. PT story on 4/4/2002. Speaking to reporters at the end of the day, visit of Gujarat, he told the Chief Minister of the day, Mr. Vajpayee, Modi ji, Chief Minister, to follow Raj Dharma and make no distinction between the people on the basis of caste, creed, and community. And further, he says, majority needs no protection. Majority is capable of safeguarding its interests. They have the number on their own. It is only the minority which needs protection, sir. This is what the same thing is happening here, sir. Nowadays, what has happened to Gujarat? Majority versus minority. The same thing is happening in Manipur. Majority versus minority. It has been inflicted upon the minorities by the majorities. The Chief Minister is helpless. He is looking lukewarm. And the Prime Minister is not coming to the Parliament, and also he has not gone there. Whereas the responsible India parties have went to the Manipur, and they have just understood what has happened, and that is why they are speaking loudly, sir. Late leader Vajpayee stood for the Raj Dharma, and we are standing behind the person who is doing the Raj Dharma nowadays, sir. But today we cannot stand behind them, because when women are gang raped, striped and nakedly paraded, 140 people were killed, 300 people were severely damaged, 65,000 people have already ran for shelter to the adjoining forest. And CM Manipur tell openly that 100 such incidents of naked parading had happened. Shame on the part of the Shame. Sir, now the whole world is condemned the happenings in Manipur in no uncertainties. European Union Parliament, they say discussion in European Parliament and British Parliament have condemned PM Modi's and his party very strongly. In the EU Parliament, sixth parliamentary group has appealed the European Parliament. They say in their plea, whereas violence in India's Manipur state has erupted along ethnic and religious lines between the mainly Hindu Meitei community and Christian Kuki community, leading to a cycle of violence with over 100 people killed, over 40,000 displaced, and the destruction of the property and places, and so on, sir. Whereas in the latest round of violence, human rights groups have accused the BJP-led government in Manipur and nationally of implementing divisive ethno-nationalistic policies which opposes in particular religious minorities. Modi visit to USA has castigated, US history has castigated 75 Democrats MPs for human rights violations in India. That is in US, sir. So lastly I want to quote Narendra Datta, sir. Narendra Datta's speech. I quote, sir. Datta addressed the gathering as brothers and sisters. He has mentioned brothers and sisters, not ladies and gentlemen. The brothers and sisters
has got more homely than ladies and gentlemen. He says in the, I quote the speech, sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanatism, have long possessed this beautiful earth. They have filled this earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nation to despair. This is what the great man Narendra Datta said to the world. The man who introduced Hinduism to the world said these words, warning the world from disaster. He also quoted, I again quote, I am proud to belong to a religion which has taught me and world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and refugees of all religions and all nations of the earth. That is what he has told, sir. Finally, he says, it is now I say, it is Narendra Modi famed Hindutva which the world witnessing today. This is nothing but Hinduism, where religious tolerance has no place. Your schemes of things has agendas like Citizenship Act amendment to drive away minorities and uniform civil code, etc. Sir. I quote, finally I quote, Thirukural 474. அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் அளவறியான் தன்னை வியந்தான் விரைந்து கெடும். He who defies righteous order, oversteps limits, and enjoys self-aggrandizement gets lost fast. This is what I want to tell my close friend Narendra Modi ji. So the whole world has warned him against the peril he is going to meet, and also the Indian parliamentarians in this house, sir. Moreover, he is very aggressive and atrocious also. During how come he is not attending the parliament, sir? Yes. How come? Yes. What right? Sir, public has elected him to come to parliament, yes. And moreover, he is holding the position of prime minister. Yes. This is not fair on the part of the sir. Over near about 1 month, all the members of parliament belonging to the opposition, every day in day out, they are just making a plea before them, and this ruling party is trying to support all these rules and regulations of the parliament and also the Constitution of India. Moreover, there is one person in our state. Finally, sir, there is one person in our state. Sir, Assembly is in session. Chief Minister and all the ruling party, the opposition, everybody in present. But before chanting national anthem, this man is going out, sir. What? Shame on the part of the governor who is ruling the state. It is not fair. So he has been brought back to the governor by the governor, and the Home Minister should take note of it. Yes. And governor should be condemned in all respects. Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Professor Saugat Roy ji. On behalf of the All India Trinamool Congress and its leader Mamata Banerjee, I rise to speak on the no confidence motion. I also speak on behalf of the India Alliance. I express confidence in the Supreme Court, which restored Rahul Gandhi's membership. Also, I express no confidence motion against this government. I have to say that I have nothing personal against Mr. Modi. But as Brutus said in Julius Caesar, not that I love Modi less, but that I love India more. If anybody loves India, they will oppose Modi. Because his government has been a government of failed promises and disastrous policy decisions. Still, sir, I do not want to make it personal. I do not want to raise the question of
Modi ji's educational qualification, over which there is a cloud. Nor do I want to speak on Gujarat riots or the BBC documentary on Modi ji on Gujarat riots. Sir, before going to my main point on Manipur, I want to mention that this government is destroying federalism in the country. Its purpose is to weaken all state governments. West Bengal is a victim because Amit Shah went to Bengal and said, "Agle bar 200 par." BJP could not even get 80 seats. So they have stopped all money for Narega, which amounts to 7,300 crores, and for PM Awas Yojana, which amounts to 8,400 crores. Our party has given a call. If the money is not released soon, then on 2nd October, we shall bring lakhs of people to Delhi to demand our share, our dues in respect of Marek. Sir, I do not want to reply to Mr. Nishikant Dubey. He is a man desperate to get into the ministry somehow or other. So he has to flatter the government. And he quoted all wrong history, which I don't want to go into. But I want to remind him that he belongs to an organization which did not participate in the August 42 movement. He belongs to an organization which was banned after Gandhiji's murder. I do not want to have any track with such organization and people representing it. Sir, before going further, I want to mention there are some ministers, sprinkling of ministers here, that ministers must control themselves. Earlier, Anurag Thakur went to a meeting in Delhi and said, "Goli maro, dash dash." And now Meenakshi Lekhi, minister from Delhi, is saying that don't speak against us, we shall send ED to your home. I want to say that I come from the land of Tagore, who said, don't fear. Ami bhai korbo na bhai korbo na. Dubela morar age morbo na bhai morbo na. I shall not fear, and I shall not die twice before dying actually. Sir, this government is a government of the heartless. They are sending delegations to West Bengal on any plea, but not one delegation has gone to Manipur, where our brothers and sisters are dying. Sir, I'll remind you that of what Mark Antony said in Julius Caesar. You blocks, I'll paraphrase it and say, you blocks, you stones, what you worse than senseless things. Oh, you hard hearts, cruel men of BJP. You have no compassion. That's why you have not gone to Manipur as all the opposition parties have gone. Sir, let me say a few words about Manipur. My young friend, Mr. Gaurav Gogoi, has very ably summed up the situation in Manipur. Manipur ethnic clashes between Meiteis and Kukis started on 3rd May 2023 and are still continuing. On 5th August, 5 people, 3 Meiteis and 2 Kukis were killed in Manipur in escalation of hostilities. So far, over 150 people have been killed. At least 100 women were raped, and over 70,000 people have been displaced, and 350 relief camps have been set up. The delegation from India which went met people in relief camps in Imphal and Churachandpur. Nishikant did not mention a single word about Manipur. This government wants to forget. Sir,
actual count may be higher. And now, these incidents in Manipur remind one of the riots in Rwanda between Hutus and Tutsis some years ago. The worst incident in Manipur came to light on 19th July when a video went viral showing two Kuki women being stripped, paraded naked on the streets and sexually assaulted by apparently Meitei men. Sir, are we living in a civilized country that this happens to our sisters? This is unimaginable. No action was taken by the police for more than 2 months until the video emerged. This was due to internet shutdown in Manipur, which, as Gaurav mentioned, is still continuing. The Prime Minister opened his mouth after 80 days since the start of violence, saying that his heart is full of pain and anger. But he has not visited Manipur till date. Now the Supreme Court has belatedly set up a 3-judge committee consisting of women judges. This is good because when the government fails, the highest court of the land has to take up the matter. Sir, till today mobs of Meiteis are attacking Kuki villages who are retaliating with SLRs, AK-47, etc. Much of the arms are coming from abroad across a porous border and is funded by mainly poppy money, opium money. Police armories are looted. The government led by BJP Chief Minister Biren Singh, who is a Meitei, has failed to maintain law and order. I demand that he should be immediately dismissed and President's rule imposed on the state. Sir, one interesting thing, you are a doctor from Ahmedabad, you will realize that what was the Prime Minister doing from May to July this year when Manipur was burning. He visited 7 countries, in which USA from 20 to 23rd June, Hiroshima, Japan, 20th May, Australia, May 24, France, July 13 to 14, UAE, July 15, Egypt to see the pyramids, 24 to 25 June, Papua New Guinea, 24 to 25 July 2023. And he was very proud that Joe and Jill Biden gave a private dinner at White House in his honor. हम कहते हैं ना साहब लोग पीठ ठोक दिया तो साहब लोग उसको प्राइवेट डिनर दिया बहुत खुश हो गया और हमारे बहन लोग उधर उनको इज्जत छीना जा रहा है. This is our Prime Minister. Sir, is our Prime Minister a roving ambassador or a traveling salesman? Because he even went to Sikar in Rajasthan to campaign in the midst of all this. Now, the Prime Minister has to reply why he was visiting foreign countries when Manipur was burning. Sir, let me come to some other points. The major failure of the government is to check price rise. Price of tomato is at 250 rupees a kg. He has failed to provide jobs. It is destroying social harmony. We have seen the communal riots in Nuh and Gurugram in Haryana. They are still continuing, polarizing the communities, destroying federalism. Sir, in Nuh, allegations are made that only Muslim houses are being demolished by bulldozers. Sir, the government is destroying federalism by sending useless governors to states to disturb state governments, as in West Bengal, Tamil Nadu, Maharashtra, and Delhi. Sir, the government has been weakening institutions, Parliament to Election Commission. Modi never comes to attend Parliament. He has not
replied to a single question in Parliament. I have seen many other parliaments. I have never seen a man like him, who as Prime Minister does not reply to a single question. He does not believe in parliamentary democracy, and maybe he. सौगत राय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ मेंबर हो। सर, प्रधानमंत्री जी का खराब बात आप अविश्वास की दरख्वास्त पर बोलो। मैं तो कोई प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री होते हैं, इस प्रकार से बातें मत करो। सर, आपको पर्सनल एलिगेशन मत करो। आपको सर, आप बहुत बड़ा डॉक्टर है। बैठ जाइए सर, आप बैठ जाइए। आप बीजेपी के हैं, लेकिन बड़ा डॉक्टर है, इसलिए मैं आपको इज्जत करता हूँ। चुप करो। सर, the central agencies, ED and CBI, they are used to target opponents and bring down opposition state government, as it happened in Maharashtra. BJP has a big washing machine. No, what? BJP has a big washing machine. When Ajit Pawar was in NCP, he was very bad. 70,000 crore irrigation scam. Now BJP's washing machine he has entered. Now he has become a good man. Amit Shah goes and praises him. Sir, I talk about demonetization. One mad decision by the Prime Minister. It caused chaos. 150 people died standing in queues for changing notes. Many MSMEs were totally wiped out. Sir, on farm bills, the government tried to press farm bills down the throat of the farmers. They resisted boldly, and ultimately government had to withdraw the farmer bills. But the farmers are still committing suicide. They are still committing suicide, and the promise to double farmers' income by 2022 is not fulfilled. Sir, PSUs are being disinvested. Banks are writing off 14 lakh crores NPAs in the last 9 years. PSUs are being privatized, including profitable ones like the LIC. Sir, I am coming to the end of my tether. Sir, special advantages are given to some industrial houses, Tatas, Ambanis and Adanis. Adani got most of the airports, including Mumbai airport, by arm twisting, and then cement companies, and then land ports. Ambanis persuaded the government to stop import of laptops, since it is bringing out laptops themselves. Tatas are buying Air India, are now buying out Vistara. Government has not given a statement on the Hindenburg research report on the Adani share scam till today. The Prime Minister avoids all discussion on Adani in the House. Sir, today LPG cylinders, as you may know, cost 1,200 rupees. Government earned above rupees 27 lakh crores by increasing duties on petroleum product. Petrol now costs rupees 106 and diesel rupees 92 per litre in my city. Sir, the Prime Minister does not fulfill his promises. He promised 15 lakhs for every household, did not fulfill. He promised 2 crore jobs per year, he did not fulfill. And this lack of compassion was displayed when, during the pandemic, a sudden lockdown announcement, lakhs of migrant workers were seen walking to their homes, some dying on the roadside. Hundreds of dead bodies were found on the banks of the river Ganga. Today, unemployment is the biggest issue. Multinational corporations are sacking large number of technical people, both India
and abroad. During the pandemic, 1 crore jobs were lost. Sir, they speak big on nationalism, but China is still camping on Indian territory in Galwan, Ladakh, and Doklam, Sikkim. Government cannot do anything. Now the government wants to rewrite history, is planning to exclude the Mughal period from history books. Will foreign dignitaries not be taken to see the Lal Killa and Taj Mahal, which were built by Mughals? They are promoting people who are not actually good freedom fighters. V.D. Savarkar, on whom there may be a controversy, he pleaded mercy from the British to get out of cellular jail in Andaman in 1922. Bengali freedom fighters, they spent their full period in the Andamans. Savarkar got out. Kindly conclude. Sir, last question. Conclude. Last matter. Agya. Sir, the worst railway accident again showed the lack of compassion of the Prime Minister. 288 people died in a rail accident in Balasore. 1,000 were injured. The PM did not care to visit Balasore nor see the patients at the hospital. Our Chief Minister went, but the Prime Minister did not care to go. He does not care. He said, huh? Afterwards. Kindly conclude. Yeah. Sir, last. Professor, conclude. Sir, the government is in a hurry in introducing Vande Bharat trains and new stations. Safety is ignored. Today, truth does not come out. News channels are muzzled. Most of them are bought over by big business. Sir, that's why I want to say the Supreme Court has already expressed no confidence in the government. Thank you very much. Sir, Thank you. I'm finishing. Sir, 2 minutes. By setting up the 3-judge committee, sir, the Prime Minister will not win the 2024 election. He is scared. Thank you. Thank you. India has been formed. Thank you. He is now depending on inauguration of Ram Mandir. Thank you. Thank That will you. not. Lastly, sir, let me make a quotation, read a quotation from John Donne, as quoted in Ernest Hemingway. He said, "Every man's death diminishes me, for I am involved in mankind. Therefore ask me not, for whom Thank the bell you. tolls, it tolls for thee." Thank you, It is Swagat Rai ji. tolling for the Thank Prime you. Minister Narendra Modi. Thank you, sir. थैंक यू. आप एक ब्रीफ इंटरवेंशन आप कर दीजिए, फिर सुप्रिया जी बोलेंगे. मैं बहुत जरूरी सूचना आपको बता रहा हूं जानकारी के लिए कि ईडी और सीबीआई की रोज बात होती है. बात मियां, मैं बता. एड्रेस टू चेयर. ये ईडी और सीबीआई इसी संसद ने बनाया था, और ईडी और सीबीआई का छापा में जो अरबों रुपए पकड़े जा रहे हो, किसके बाप के पैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद. ये श्रीमती सुप्रिया सुले जी. कुछ कहना चाहते हैं एक जस्ट अ मिनट. निशिकांत जी. स्पीकर्स डायरेक्शन 115 रूल 115 स्पीकर्स डायरेक्शन. चेयरमैन बनिए सर, चेयरमैन बनिए. 115 स्पीकर्स डायरेक्शन सर. ठीक है, वी विल सी इट लेटर ऑन. सुप्रिया सुले जी. सुप्रिया सुले. आप चेयरमैन बनिए. मेरा टाइम मत कट करिए इनके कारण. आप बैठ जाइए. आप बैठ जाइए. यू आर वेरी सीनियर पर्सन. आप बैठ जाइए. सुप्रिया सुले जी. गो टू योर प्लेस. टेक योर प्लेस. But I don't want to be disturbed. हाँ, यू कैन. Sir, please start my. सुप्रिया जी. सुप्रिया सुले जी. Please take your place. Sir, I stand here today on behalf of the NCP and the India team to speak in support of this no confidence motion. Sir, why do you really think we brought this no confidence motion? It's because we are representatives
of the Indian citizens. And that's why the sentiment of the nation is what we are standing here for. This is what people tell us. What does a member of parliament do? He is the voice, or she is the voice of what the citizens of India feel, and that's our moral duty. And I thank Gaurav Gogoiji for moving this motion, which is the true emotion of an Indian citizen today. There's a Mr. Friedman, who's one of the best economists the world has ever seen. I'd like to quote him by saying, one of the great mistakes is to judge policies and programs by their intention rather than their results. I'm not taking away from the intention of this government, but what are really the outcomes of the results is something which deeply pains me, hence the no confidence motion. I will be coming to the main point, which is Manipur, but there are few short points I'd like to make before. Whenever I think of this government, the first thought that comes to my mind, the word that comes to my mind is hubris. It is, I'd like to quote the Mahatma Gandhi, it is unwise to be too sure of one's wisdom. Every time this government talks, they're only not talking about the moment. It's the future. हम तो आने वाले, आप तो खत्म होने वाले. Every opposition तो है ही नहीं. This is a democracy. We should encourage each other. And while this is going on, the only word I can think of for the attitude and the approach, even the ministers, when we are sitting here, say, अरे इनको तो हाउस चलाना ही नहीं है, ये नहीं करना चाहते. अभी तो जुम्मे आए हो राज्यसभा से. And then you're going to judge us. भूल गए, आप तो थे नहीं तब. पता नहीं कौन से गवर्नमेंट में काम करते थे तब. They're judging all members of parliament. We are not officers, we are public servants. प्रधान सेवक जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, हम भी सेवक ही यहाँ बैठे, उसी के लिए तो खड़े हैं यहाँ. So it's the attitude of this government is hubris, there is no other word. And why are we feeling? जैसे नौ रत्न, इनको बड़ा शौक है ऐसा बोलने का. So नौ रत्न, 9 साल, because they had this big campaign, all the ministers were sent all over the country to talk about the new 9 points. In 9 years, the achievements, in short I'll say, what is in 9 years the great achievements of this government? Is state governments toppled by the BJP? Is this fair democracy? Price, महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की मार अब की बार शायद सबको याद होगा. LPG की प्राइस, कर्नाटक इलेक्शन ने दिखा दिया LPG का क्या होता है फिर. Institute broken. How many institutes have been broken? जुमले पे जुमला. I like अमित शाह जी, सच बोलते हैं आपकी बात साइड से बहुत कम. ये वो या गडकरी साहब बोले थे कि ये जुमला ये गले की हड्डी हो गया, ना नीचे जा रही है ना बाहर आ रही है. That is the problem. Indexes which I've shown where globally India has fallen. Anti-federal, cooperative federalism का तो बोल के हम थक गए. Indicators of the economy which I will be coming to in 2 minutes. And law and order, which is alarming in Manipur, Haryana, J&K, and 1 or 2 cases of Maharashtra. Sir, 9 years में, 9 साल में, 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है. अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार. This is it. And what is it? 7 sins of Mahatma Gandhi. Politics. उस दिन मुझे अच्छा लगा जब अमित शाह जी बोल रहे थे सिद्धांत के बारे में. The 7 sins of Mahatma Gandhi, उसमें का एक है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स. और मुझे याद है जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब कह रही थी पार्टी विद अ डिफरेंस. हाउ आर यू अ पार्टी विद अ डिफरेंस? 9 साल में 9 सरकारें गिनवाई है मैंने. फिर बहुत हो गई महंगाई की मार. आई थिंक प्रोफेसर रॉय जस्ट टच्ड ऑन सम ऑफ इट. ही ओनली स्पोक अबाउट टमाटो. प्याज का क्या है, दाल का क्या है, आटे का क्या है, नमक का क्या है, चावल का क्या है, तेल का क्या है, चाय और दूध. टोटल जब यूपीए की सरकार थी ये सारी थाली 500 रुपए के अंदर बनती थी. आज भाव आप देखेंगे तो 1000 के ऊपर इस सबका हो. दैट इज द फूड इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बहुत हो गई महंगाई की मार. प्याज के बारे में और दूध का मैं छोटा उदाहरण दूं. प्याज के बारे में मैंने जब गुजरात महाराष्ट्र में इतना प्याज था, मैं विनती करके थक गई कॉमर्स मिनिस्ट्री को, पीयूष जी गोयल को मैंने ट्वीट भी किया था, उनका जवाब भी आया था कि आप ये प्याज जो महाराष्ट्र में पड़ा है कोई नहीं ले रहा है, उसको प्लीज आप एक बाहर भेज दीजिए. बिकॉज ग्लोबली देयर वर लेस अनियंस, देयर वाज नो प्रोडक्शन बट इंडिया हैड अ सरप्लस. व्हाई डिड यू डू दिस? दिस इज व्हाई वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट. मिल्क, आज यहाँ से जब दिखा रहे थे आप प्रोडक्शन, उसमें दिखा रहे थे मिल्क का बहुत अच्छा प्रोडक्शन. या व्हाई आई डोंट हैव इन दिस
I don't have the confidence in this government because it's anti-farmer. Farm laws के बारे में आपने बोला, डबलिंग ऑफ इनकम के बारे में बोला, कौन सा इनकम डबल हुआ? दूध के बारे में इसी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस, एक पेपर निकाला था कि वी विल अलाउ इंपोर्ट ऑफ मिल्क फ्रॉम अब्रॉड. When there is surplus in this country, यहाँ के किसान को भाव नहीं मिल रहा है, तो आप बाहर से क्यों दूध ला रहे? प्याज तो नहीं भेज रहे, प्याज जाने के लिए मनाही है, यहाँ किसान मर रहा है, लेकिन बाहर से दूध आप लाएंगे वो अलाउड है. How can we have confidence in this government, sir? How can we have faith in this government? Indian Raki, Indian, I'm not yielding. Modi ji, I will happy to table. Mr. Pawar had written to the minister, I'll be happy to table it. I will 100%. I will table it. I will table it if he is. I will 100% table it. I have no problem because Mr. Pawar had only written to one of your ministers and that ordinance, that letter had come to government of Maharashtra. I'd be happy to do it. Prashant Bhushan, there's a tweet I remember where there were issues raised. अच्छे दिन कहते थे आप, अच्छे दिन आएंगे. मैं पूछना चाहती हूँ, health and survey index, India has gone down. Hunger index, down. Human freedom index, down. World happiness index, down. Environment protection index, down. Gender equality, down. Democracy, down. So many और कितने भी पढ़ा हुआ टेबल कर दूंगी सर. Anti cooperative federalism, कितने आपको गिनवाऊं जा, आप तो थके मेरा भाषण सुन सुन के. अभी मैं संक्षेप में बोलूंगी because I think सौगता बाबू has already spoken that point, so I won't repeat it. सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास. Horrific death of 288 people. वंदे भारत की बात करते, अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, लेकिन वंदे भारत के साथ अगर गरीब ट्रेन और रहते, गरीब रथ होते, तो मैं भी इनके साथ बोलती कि अच्छी बात है. और वंदे भारत में कौन सी ट्रेनें रुकती है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 3 स्टेशन है, दौंड, नीरा, बिगवन. सब ट्रेन वहां की बंद कर दी है. नो स्टॉपेजेस. क्या करूं उस वंदे भारत का? ऐसी जाती है जब से 1 सेकंड में. बस देखिए, जाए बच्चों को दिखाए कि यूपीए की सरकार जब थी ना, तो यहाँ 10-10 ट्रेनें रुका करती थी. ये जब एनडीए की सरकार आई ना बेटा, ये बहुत अच्छा है, अच्छा है, ये ट्रेन जाती थी, आज रुकती नहीं है. और वंदे भारत गरीब के लिए नहीं है, गरीब रथ गरीब के लिए है. जहां डाउन स्टेशन में रुकती थी ट्रेन, वहां का किसान पूना जाता था, वहां का मेहनत करने वाला बच्चा सीखने के लिए वहां जाता था, वहां के जो लोग हैं लेबर डिपार्टमेंट, वो वहां से उस ट्रेन से जाते थे. आज एक दिन भी नहीं रहती, एक ट्रेन वहां नहीं रुकती. हम स्टॉपेज मांग मांग के थक गए. और परसों जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हुआ था, उसमें बड़ा कार्यक्रम, बड़ा मंडप लगा था, बड़ा चाय कॉफी हुआ था, लेकिन दौड़ में ट्रेन नहीं रुकी, न वंदे भारत रुक रही है. बस प्रोग्राम तो हो गया और एक जुमला हो गया. मैं वंदे भारत के खिलाफ नहीं हूँ, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये है. मैं और बोलना चाहती हूँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट क्या है आज, जिसके बारे में थोड़ा सा प्रोफेसर रॉय बोले. इंक्रीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, इकोनॉमी की बात बोलते हैं, 55.87 लाख करोड़ 2014 में था, विच हैज बिकम 155.6 लाख करोड़ is the debt of this government. 178.5 times central debt. How are we going to pay this? This is central government debt. There's external debt. External debt in India has gone from USD 6 to 4.7 billion at the end of March 23 from US 440. 41% interest. How are you going to pay this? By selling the family silver. फिर पैसा वापस कैसा करेंगे? इसीलिए आपको LIC बेचना पड़ रहा है, IDBI बेचना पड़ रहा है, पता नहीं ONGC भी कल बेच दे, पता नहीं क्या करेगी ये सरकार. This is why we are no confidence in this motion. How is this economy going to work? Cash in circulation, demonetization कर दिया, कोई cash नहीं करेगा. Cash in circulation today has increased. It was 12 point. फिर ये कह देंगे economy का size बढ़ गया, but percentage of the money is the same. How are you saying cash in circulation was 12.83 lakh crores? It has become 33.48 lakh crores in 20. Nearly 1.6% increase in bank notes in circulation. तो demonetization करके क्या पाया आपने? Non-performing assets, 18.2 lakh crores. Non-performing assets. ये अगर write off कर रहे हो, तो किसान का भी कर दो.
ये किसका आपने 18.2 लाख क्रॉस, पता नहीं इसमें जीरो भी कितने हैं, इतनी गिनती मुझे तो नहीं आती. Another thing, India renouncing Indian citizenship. High net worth individuals, 12 lakh have left this country. How will the economy grow of this country? Doubling of farmers. Now, if these are the questions, how can we trust this government? महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान आप देख रहे हैं उसके हाल क्या है. How can we support this government? साहब आप बताइए. Now is the main 2 minutes only. Last point, sir, which is the most important. That's why ये सब हुआ. Is this shameful blunders in Manipur of the state government, and I demand that just today after this, the chief minister must resign. How can you allow this, sir? How this is? People dead 179, people displaced 60,000, relief camps 350, still in camps 40,000 people, houses burned 3,662, religious places burned 321, companies by the companies of Central Force deployed 161, and cases of rioting, murder, rape 10,000, sir. 10,000 se zyada. Have we become so insensitive? This is the problem with this government, and I want to seek a clarification, which Gaurav Gogoi touched in a very small way, because I'm very confused. So I would like to ask this question to this government, that there is a PIL filed in the NI court. This Mr. Haukip, I may be pronouncing his name wrongly, of the United Kuki Liberation Front said that he had written to the Home Minister Amit Shah ji regarding a claim that UKLF, the United People's Front, had helped BJP candidates win in 2017 Assembly as per arranged with some other chief minister. I don't want to name him. What is the, and a senior BJP leader. Now, these are organizations which are grey. So, is this government anti-national? Is my question. I'm asking a question. I'm not making an allegation. This is what is come in newspapers. I'm not commenting on anything that's gone wrong anywhere. I want to ask that Mizoram today are women. Doesn't matter who they are Indians first. Yes. किसी की तो बेटी है, किसी की तो बहू है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है. Will you allow this to happen and shame the women of this country? And this is what this government stands for. How can you ask your conscience, अंतरात्मा से एक बार पूछ लीजिए, how can you support a government like this? This is not about them versus us. This is about the dignity of the woman of this nation. उसकी इज्जत उछालो, this government is going to keep quiet. How are you going to allow? I'll make one small solution to this government. What should this government really do? हर देश में किसी की भी, महाराष्ट्र में भी हो भी किसी, राजस्थान की हो, किसी की भी हो, वो किसी की भी बेटी है. Two wrongs don't make a right. And I would like to quote just one small point, sir. Please. I would like to make a suggestion to this government. Okay. I'm not only criticizing, I'm making a suggestion. I would like to quote the Mahatma in this. It says, I offer you, what should they do now? Is what I'm referring to them. What should they do? I offer you peace. I offer you love. I offer you friendship. I see your beauty. I hear your need. I feel your feelings. My wisdom flows from the highest source. I salute that your source in you. Let's work together for unity and peace. That's what Manipur needs. These guns are not going to solve all our problems, sir. And again, I want to remind this government that 2024 is their only goal. I'd like to quote Julius Caesar, just since Professor Roy talked about it. It's only hubris if I fail. In the epic poem Paradise Lost by John Milton, the character of the Satan displays hubris when he attempts to rebel against God's rule in heaven, and when he eventually declares that it's better to reign in hell than serve in heaven. So I think this government needs to rethink. I stand here by India for the larger good of this nation and the dignity of every citizen who deserves it, and this government is failing the poor and the honest people of this country. Thank you. Very good. सभापति महोदय कि आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी पार्टी की ओर से अपना मत प्रकट करने का यहां पर अवसर दिया. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने 2018 में ही कहा था कि विपक्ष जो है मेरे खिलाफ जो है 2023 में अविश्वास प्रस्ताव जो है लेकर आए, और आज वैसे ही हो रहा है.
2018 में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था और 2019 में